Hello everyone, welcome back to my channel Let's Dissect Anatomy. Today we will discuss another topic of head and neck, that is oral cavity or mouth. Okay, so let's start. First of all, introduction. The oral cavity or mouth is the first part of the digestive tube. It extends from lips to the oropharyngeal isthmus. Oral cavity और pharynx के बीच का जो junction है, it is called oropharyngeal isthmus. So lips से start होके that isthmus तक का जो area है, that is called oral cavity. Oropharyngeal isthmus, as I have said, is the junction between mouth and pharynx, and it is bounded above by the soft palate and palatoglossal fold. So here you can see from the picture, this is the soft palate, और जो ये साइड में दिख रहा है, they are the palatoglossal fold. तो वो ऊपर ये दोनों स्ट्रक्चर से बाउंडेड हैं, and below it is bounded by the upper surface of the tongue, or you can say dorsum of the tongue. The oral cavity is subdivided into two parts, vestibule and oral cavity proper. Now first of all, what is vestibule? Vestibule of the mouth, it's actually a narrow space bounded externally by the lips and cheeks and internally by the teeth and gums. Means अगर हम gums teeth को close कर दें तो teeth और gums से एक अंदर का layer बनेगा, और lips को बंद कर दे तो lips और cheeks से एक बाहर का layer बनेगा. तो that space between teeth and gums and lips and cheek, that is called vestibule. It communicates with the external through the oral fissure, and with the mouth open it communicates freely with the oral cavity proper. अगर teeth हम open कर दे तो वो अंदर की oral cavity के साथ भी communicate करेगा. The lateral wall of the vestibule is formed by the cheek, which is mainly composed of buccinator muscle, covered laterally by the skin and medially by the mucous membrane. It is superiorly and inferiorly limited by the reflections of the mucous membrane from lips and cheeks onto the gums. So lips and cheeks का जो mucous membrane है वो फिर gum के साथ continuity में रहता है, तो वो reflections से ऊपर और नीचे की तरफ वो bounded है. So I think you are clear about what is vestibule is. See, in this topic, the very important one is tongue. It can be asked as a long question, a very important. But before going to describe the tongue, I will describe in short about all the structures in and around the oral cavity. Okay? Except teeth, the entire vestibule is lined by the mucous membrane. So teeth है, उसके सिवा बाकी सब जो vestibule है वो mucous membrane से covered है. The mucous membrane forms the median fold that pass from lip to the gums, and that is called frenulum of the lip. So here you can see from the picture, ये lip से gum का दोनों के बीच का ये connection है, this one, और नीचे भी lip और gum के बीच का ये connection है, this one. This is called frenulum of the lip. ऐसे ही same frenulum of the tongue भी आता है. A small papilla on the mucosa opposite the upper second molar tooth marks the opening of the duct of the parotid gland. Here, this one. We have discussed this in detail during the video of parotid gland. If you want to revise, you can watch that video again. Many labial and buccal glands are situated on the lips and cheeks, and 4 to 5 molar glands are also situated over the buccopharyngeal fascia, which also opens onto the vestibule. Okay, so this is in short about the vestibule. The lips, they are the two fleshy musculofibrous folds that surrounded the opening of the mouth. The upper and lower lips meet laterally at an angle of the mouth, usually in front of first premolar tooth. ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द एंगल ऑफ द माउथ. वहाँ पे अपर एंड लोअर लिप एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं.
The lips are lined externally by the skin. बाहर के पार्ट में skin है और internally by mucous membrane, and this junction of skin and mucous membrane is called mucocutaneous junction, and it is referred as the edge of the lip. The red part of the lip is called vermilion zone, and it is due to its rich blood supply. Each lip is composed of skin, superficial fascia, orbicularis oris muscle, and the submucosa contains the labial glands, blood vessels, and mucous membrane. The next term is cheek. The cheeks are fleshy flaps forming a large part of the each side of the face. They are continuous in front with the lips, and the junction is indicated by the nasolabial sulcus, which extends from side of the nose to the angle of the mouth. The nose की दोनों तरफ एक line जैसा बनता है from side of the nose up to the angle of the mouth. जब हम बोलते हैं या smile करते हैं तो you can see that fold clearly, the line that is called nasolabial sulcus, okay, which extends from the side of the nose to the angle of the mouth. The cheek is composed of skin, superficial fascia with facial muscles, parotid duct, molar glands, few blood vessels and nerves, the buccinator muscles, the submucosa, buccal glands, and mucous membrane. The buccal pad of fat is best developed in infant. It lies on the buccinator, partly dipped to the masseter and partly in front of it, right? So now we'll discuss the oral cavity proper. Vestibule का अंदर का part means teeth and gums की अंदर का area. Okay, so first of all, the boundaries of the oral cavity proper. Anterolaterally, it is bounded by teeth and gums and the alveolar arches of mandible and maxilla. So anteriorly or laterally oral cavity की boundary होगी teeth, gums and alveolar process of mandible and maxilla. The roof here is formed by the hard palate anteriorly and soft palate posteriorly. Here you can see from the picture, this is the oral cavity proper. The anterior part of the roof is formed by the hard palate, while the posterior part is formed by the soft palate. And the floor is formed by the mylohyoid muscle. It is occupied by the tongue posteriorly, and the sublingual region anteriorly below the tip of the tongue. Posteriorly, the oral cavity proper communicates with the pharynx through the oropharyngeal isthmus, which is bounded superiorly by the soft palate and inferiorly by the tongue. And on each side there is a palatoglossal arches. Okay, so these are the boundaries of the oral cavity proper. The lymphatic drainage of the anterior part of the floor, it drains into the submental nodes. The hard palate and soft palate drains into the retropharyngeal and upper deep cervical lymph nodes, and gums and rest of the floor of the oral cavity proper drain into the submandibular nodes. The floor of the mouth, it is covered with the mucous membrane. In the midline there is a mucosal fold which is called lingual frenulum. जो frenulum of the lip था ना, वैसे ही ये frenulum of the tongue है, lingual frenulum. Here you can see this one, which connects the tongue with the floor, which connects the tongue to the floor of the mouth. On each side of the frenulum, a small sublingual papilla is present and has the opening of the submandibular duct. तो नीचे की तरफ देखो, आपको दो डॉट दिख रहे हैं, 1 and 2. These two, they are the opening of the submandibular duct. We have already discussed the opening of the submandibular duct in video of submandibular gland. You can watch that video to revise this topic again. A round ridge extending backward and laterally from the papilla, it is produced by the sublingual gland. जो दोनों डॉट दिख रहे हैं आपको, वहाँ से एक राउंडेड रीड्स जा रही है दोनों तरफ, देखो, this one and this one. This is because of the sublingual glands.
The nerve supply, the sensory nerve supply of the roof, it is by greater palatine and nasopalatine nerves. The floor, it is supplied by the lingual nerve, and cheek, they are supplied by the buccal nerve. Motor nerve supply, muscles in the cheek, that is buccinator, and the lip, that is orbicularis oris, they are supplied by the branches of the facial nerve. Okay, so that is the oral cavity proper. Now a very important long question, that is tongue. First of all, introduction. The tongue is a mobile muscular organ situated in the floor of the mouth. It's essentially a mass of skeletal muscle covered by mucous membrane. The muscle mass is separated into the right and left half by a midline fibrous septum. बीच में आप टंग में देखोगे तो एक लाइन जैसा दिखेगा. This is the midline fibrous septum. The tongue is separated from the teeth by a deep alveolo-lingual sulcus, which is filled in by palatoglossal fold and or arch posteriorly to the last molar tooth. It is associated with the functions of taste, speech, mastication and deglutition. These are the main four functions of the tongue. First of all, the external features, outer features of the tongue. The tongue has mainly three parts: a root, a tip and the body. The root means the posterior most part. The root is attached to the mandible and soft palate above and to the hyoid bone below. ऊपर की तरफ वो सॉफ्ट पैलेट और मैंडिबल के साथ अटैच है, नीचे हायोइड के साथ अटैच है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्वॉलो द टंग इटसेल्फ. अगर वो अटैचमेंट ना होते तो टंग को भी हम निगल जाते. द टिप ऑफ द टंग फॉर्म्स द एंटीरियर फ्री एंड विच एट रेस्ट लाइज बिहाइंड द अपर इंसाइजर टिथ. ओके, जो टिप है वो जब माउथ क्लोज होता है तो अपर इंसाइजर के पीछे रहती है. The body, the main bulk of the tongue between the root and tip, it is called body of the tongue. It is mainly have two surfaces, the upper surface which is called dorsal surface and the lower or inferior surface, it is called ventral surface. The upper surface is convex on all the sides. It is divided by a V-shaped sulcus called sulcus terminalis into two parts, anterior 2/3 and posterior 1/3. Before going further, I will show you that sulcus terminalis. Here you can see this V-shaped sulcus is there. This is called sulcus terminalis. तो इसका आगे का जो पार्ट है, this one, it is the anterior 2/3 of the tongue, और ये जो पीछे का पार्ट है, this is the posterior 1/3 of the tongue. So anterior 2/3 is also known as the oral part, while the posterior 1/3 it is known as the pharyngeal part. The apex of the sulcus terminalis is marked by a blind median pit. जो apex होती है sulcus की, वहाँ पे छोटा सा pit होता है, that is called foramen cecum, which indicates the point of origin of median thyroid डायवर्टिकुलम, जहाँ से थायराइड का डायवर्टिकुलम और अल्टीमेटली फिर थायराइड ग्लैंड भी डेवलप होता है, उसका वो निशानी है. मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में वहाँ से निकला था थायराइड डायवर्टिकुलम, मतलब वो इंडिकेट करता है. हियर यू कैन सी इन द लैटरल व्यू, दिस वन इज द ओरल पार्ट, दिस वन इज द फेरेंजियल पार्ट, दिस इज द बेस ऑफ द टंग. First of all, anterior 2/3 part or oral part. The superior surface of oral part shows a median furrow. जो मैंने बोला था ना, midline में एक line होती है, this one. It is placed on the floor of the mouth. Its margins are free. Anterior 2/3 की margins सभी free रहती है. And contact with the gums and teeth. वो touch करती है gums and teeth को. The mucous membrane here is pink and moist, and it appears velvety due to presence of numerous papilla over it. टंग को आप टच करोगे तो वो एकदम वेलवेटी होगी, मॉइस्ट होगी,
velvety और rough appearance उसका क्यों है? Because of the presence of the papilla over them. Papilla are nothing but they are the projections of the mucous membrane which gives the anterior 2/3 of the tongue its characteristic roughness. अब पेपिला कौन कौन से होते हैं? तो 4 types of papilla are present: circumvallate, fungiform, filiform and foliate. Okay, the first one, circumvallate papilla. It is the largest and are 8 to 12 in number. They are situated just in front of sulcus terminalis. So यहाँ पे आप देख सकते हो, this is sulcus terminalis और उसके आगे देखो ये वाले, ये सब, they are the vallate or circumvallate papilla. Then fungiform papilla, they are numerous near the tip. टिप के नज़दीक होते हैं. They are smaller than vallate but larger than filiform. तो वो मेनली यहाँ पे होता है filiform papilla, ये एरिया में, टंग के टिप के एरिया में. Then comes filiform, they are narrowest and most numerous. सबसे ज़्यादा filiform होते हैं ये वाले एरिया में सब पूरा. Have the conical projections with sharply pointed tips located on the dorsum of the tongue and have characteristic velvety appearance. The fourth one is foliate papilla. They consist of 4 to 5 vertical folds near the margins in front of sulcus terminalis. They are rarely seen. आप यहाँ पे देख सकते हो, this one जो ऐसे lines दिख रही है ना आपको यहाँ पे और यहाँ पे, they are the foliate papilla. Okay, and they are rarely seen. Now the posterior 1/3 or pharyngeal part of the tongue, it lies behind the sulcus terminalis. Sulcus terminalis के पीछे का पार्ट, ये वाला, its posterior surface is known as the base of the tongue. It forms the anterior wall of the oropharynx. The mucous membrane here has no papilla. एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 2/3 का डिफरेंस यही है, 1/3 का डिफरेंस यही है कि एंटीरियर 2/3 में पेपिला प्रेजेंट है, पोस्टीरियर 1/3 में एब्सेंट है. बट दे हैव द लिम्फोइड फॉलिकल्स. वहाँ पे लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं दैट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट्स द लिंगुअल टॉन्सिल्स. लिंगुअल टॉन्सिल्स बनाते हैं, जो आपको दिख रहा है ये रफ राउंडेड ये वाले, दे आर दी lymphoid follicles. Posterior most part of the tongue is connected to the epiglottis by 3 fold. आपको ये जो curved part दिख रहा है यहाँ से लेके ये वाला, this is the epiglottis. तो जो posterior 1/3 वाला पार्ट है टंग का, वो ये epiglottis के साथ 3 folds से connected है, 1, 2 and 3. तो जो राइट एंड लेफ्ट वाले हैं, दे आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड. टंग है तो ग्लोसो, एपिग्लोटिस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो एपिग्लोटिक, ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड. और जो मिड लाइन वाला है, इट इज कॉल्ड मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड. ओके, ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियन फोल्ड देयर इज अ डिप्रेशन. ये वाला जो पार्ट है वहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड वेलिकुला. ओके, so that was the dorsal surface. Now the inferior or ventral surface. टंग ऊपर करेंगे तो उसका नीचे का पार्ट जो दिखेगा ये वाला, this is the ventral or inferior surface. It is smooth, they don't have papilla, thin and purplish in color. In the midline there is a lingual frenulum, ये वाला, lateral to the frenulum deep lingual vein is there. उसके लेटरली देखो आपको ब्लू कलर का डॉट्स दिख रहे हैं, दे आर दी डीप लिंगुअल वेन. और उसके भी लेटर यू कैन सी अनदर रेड पार्ट, दिस वन, इट इज दी प्लिका प्रिम्बिडाटा. ओके, नाउ द मसल्स ऑफ द टंग, द स्लाइड्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, दे आर very important, not only for theory but for the practical viva also. Okay, so first of all, the muscles of the tongue is composed of mainly 2 types of the muscle, intrinsic muscles and
एक्सट्रिंसिक मसल. इंट्रिंसिक मतलब जो टंग के अंदर ही है, दे आर द इंट्रिंसिक. और एक्सट्रिंसिक मतलब जो टंग को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करते हैं, दे आर द एक्सट्रिंसिक मसल्स. Each half of the tongue contains the 4 intrinsic and 4 extrinsic muscles. The intrinsic muscles, they are confined to the tongue, they don't have any bony attachments, and they consist of longitudinal fiber, transverse fiber and vertical fiber. Here you can see these are the longitudinal fiber, then comes transverse fiber, and these are the vertical fibers, and the function of this muscles is to alter the shape of the tongue. स्पीकिंग के टाइम अलग अलग वर्ड्स बोलने के लिए अलग अलग शेप टंग का बनता है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इंट्रिंसिक मसल्स. द एक्सट्रिंसिक मसल्स दे कनेक्ट द टंग टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, मीन्स द सॉफ्ट पैलेट एंड द 3 बोन्स, द मैंडिबल, हायोइड एंड स्टाइलोइड प्रोसेस. ओके, सो जो टंग को सॉफ्ट पैलेट के साथ कनेक्ट करता है दैट इज पैलेटोग्लोसस. मैंडिबल के साथ जो कनेक्ट करता है डेट इज जिनियोग्लोसस. मैंडिबल में जीनियल टुबर्कल्स थे, इफ यू रिमेंबर, और द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी. इफ यू डोंट रिमेंबर, यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ मैंडिबल एज वेल. देन जो टंग को हायोइड बोन के साथ कनेक्ट करता है दैट इज हायोग्लोसस, एंड जो स्टाइलोइड प्रोसेस के साथ कनेक्ट करता है दैट इज स्टाइलोग्लोसस. एंड द फंक्शन ऑफ दिस मसल्स इज टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द टंग. ओके, अब मूवमेंट कौन कौन सी है, तो वन इज प्रोट्रूजन, जो टंग को हम बाहर निकालते हैं. इट इज परफॉर्म्ड बाय जिनियोग्लोसस ऑन बोथ द साइड्स एक्टिंग टुगेदर. रिट्रैक्शंस, बाहर निकाले हुई टंग को अंदर वापस ले जाए, दैट इज रिट्रैक्शन. इट इज परफॉर्म्ड बाय स्टाइलो एंड हायोग्लोसस. देन डिप्रेशन ऑफ द टंग, टंग को बाहर निकाल के नीचे जो करते हैं दैट इज बाय हायो एंड जिनियोग्लोसस. एंड एलिवेशन ऑफ द टंग, इट इज परफॉर्म्ड बाय stylo and palatoglossus of both the side acting together. So you have to remember the muscle responsible for these each movements. Okay, so here you can see the different shapes of the tongue, right? They are performed by the action of intrinsic muscles. Now the sensory nerve supply of the tongue. एंटीरियर 2/3, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो जनरल सेंसेशन है इट इज सप्लाइड बाय लिंगुअल नर्व, एंड द स्पेशल सेंसेशन इट इज सप्लाइड बाय कॉर्डा टिम्पेनी नर्व. पोस्टीरियर 1/3 में बोथ जनरल एंड स्पेशल सेंसेशन दे आर बाय ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, एंड द बेस हियर ऑल्सो द जनरल एंड स्पेशल सेंसेशन इज बाय इंटरनल लैरिंजियल नर्व. ओके, ये स्लाइड्स भी आप थरली याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वन लाइनर एज वेल एज वाइवा. नाउ द मोटर नर्व सप्लाई ऑफ द टंग. सो इंट्रिंसिक मसल्स, ऑल 4 intrinsic muscles are supplied by hypoglossal nerve. The extrinsic muscles are supplied by hypoglossal nerve except palatoglossus, which is supplied by the 11th cranial nerve through pharyngeal plexus. So overall हम बोले तो all the intrinsic and extrinsic muscles are supplied by hypoglossal nerve, cranial nerve number 12, except one palatoglossus which is supplied by number 11, right? The blood supply, the arteries which supply the blood to the tongue, it is lingual artery, tonsillar branch of the facial artery, and ascending pharyngeal artery. Here you can notice they all are the branches from the external carotid artery. The veins are deep lingual veins which ultimately drains into the internal jugular vein. The lymphatic drainage of the tip, it drains into the submental nodes. Anterior 2/3 drains into the submandibular. Posterior third is drains into the deep cervical nodes, and posterior most part which drains into the upper deep cervical nodes. The functions of the tongue, it is the most important articulator for the speech production. एक तो speech उसका main function हो गया. During the speech, the tongue can make amazing range of the movements. The primary function of the tongue is to provide the mechanism of taste. तो
स्पीच के बाद दूसरा फंक्शन है टेस्ट. टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग बट आर जनरली फाउंड अराउंड द एजेस. मोस्टली एजेस के साइड में टेस्ट बर्ड्स होते हैं. दे आर सेंसिटिव टू फॉर मेन टेस्ट bitter, sour, salty and sweet. Here you can see from the picture this red color part, it is for the sensation of sweet taste. This green part is for salty, yellow one it is for sour and the posterior most part it is for bitter taste. अगर आप कोई भी शुगर या कुछ भी स्वीट टेस्ट करना चाहोगे तो आपको टिप पर रखोगे तो तुरंत ही आप फील कर पाओगे, या पीछे की तरफ स्वीट आप टेस्ट करने जाओगे तो उतना फील नहीं होगा. सेम वे जो बिटर टेस्ट है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में आप रखते हो तो बिटर टेस्ट फील होता है, आगे रखोगे तो इतना फील नहीं होगा, राइट. द टंग इज नीडेड फॉर sucking, chewing, swallowing, eating, drinking, kissing, sweeping of the mouth for the food debris and other particular particles and for making funny faces. The trumpeters जो trump बजाते हैं and horn and flute players, they have a very well developed tongue muscles and they are able to perform a rapid controlled movements or articulation. उनके clinical anatomy, the first condition is tongue tie, also known as the ankyloglossia. It is due to the large frenulum. जो tongue lingual frenulum है वो थोड़ा ज़्यादा large हो जाएगा तो वो नीचे टंग को पकड़ के रखेगा, तो टंग ऊपर नहीं हो पाएगी. ओके, तो उसकी वजह से टंग टाई हो जाता है. लीजन ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व. अब हाइपोग्लोसल नर्व, नाउ यू ऑल नो इट इज़ द मेन नर्व सप्लाई फॉर द मसल्स of the tongue. So अगर उसको इंजरी हुई तो the protruded tongue deviates towards the side of the lesion. टंग को हम बाहर निकालेंगे तो वो जिस साइड की हाइपोग्लोसल नर्व इंजर्ड है उस टाइप पे ऑटोमेटिक डेविएट हो जाएगी और धीरे धीरे वो एट्रोफिड और रिंकल भी होने लगेगी. ओके, देन जीनियोग्लोसस इज द सेफ्टी मसल्स ऑफ द टंग बिकॉज if it is get paralyzed, the tongue fall back on the oropharynx and block the air passage. So if you remember, the protrusion of the tongue means tongue को बाहर आगे निकालना, वो कौन सा मसल परफॉर्म करता था? तो जीनियोग्लोसस. अगर जीनियोग्लोसस का पैरालिसिस हो जाएगा तो टंग आगे निकलेगी ही नहीं. ओके, तो पीछे चली जाएगी, तो इट रोल्ड बैक posteriorly and blocks the whole oropharyngeal isthmus, means by that way it blocks the airway also. Okay, so that's why this genioglossus muscle is known as the safety muscle of the tongue, important for the one liner as well as viva. Few drugs are lipid soluble and they can diffuse through the thin mucous membrane lining the sublingual region of the oral cavity and can be easily absorbed into the circulation. For example, tablet sorbitrate. आपको अगर याद पता हो, सुना हो कहीं पे, तो हार्ट अटैक होता है या चेस्ट पेन होता है तो डॉक्टर्स जीभ के नीचे गोली रखने के लिए देते हैं. वो कुछ नहीं है बट वो टैबलेट सॉर्बिट्रेट है जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं और नीचे जीभ के नीचे आपको पता है कि सबलिंगुअल ग्लैंड्स का ओपनिंग होता है. ठीक है, तो वहाँ पे रखने से इजीली फास्ट एब्जॉर्ब हो जाती है or it will act immediately. Okay, the referred pain is felt in the ear in the disease of the posterior third of the tongue. So posterior third of the tongue में कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो उसका पेन कान में भी जाएगा. Why? Because the glossopharyngeal nerve is the common supply to both the area. posterior 1/3 और ear दोनों का जो nerve supply है वो glossopharyngeal nerve, 9th nerve है. That's why कान में होगा तो पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग में फील होगा, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग में होगा तो कान में फील होगा. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द टंग. अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. वॉच दिस वीडियो 2 to 3 times to understand this topic better. So hope you like this video. If you like, hit the like button, subscribe the channel and press the bell icon and share it to your friends. See you in the next video.
Till then, goodbye. Thank you.